उसको श्रवण कराया, क्योंकि प्राप्त किया। व्यासदेव के पुत्र होने के नाम उसके नाम रखा गया। So because he's the son of Vyasadeva, Shukadeva is called Badarayani. बादरायणी शब्द के द्वारा भी कल हम लोग ने So yesterday we discussed about his name being Badarayani, the name of Shukadeva Goswami. व्यासदेव गोस्वामी पाद कठोर तपस्या आदि के द्वारा That Vyasadeva Goswami, he performed so many hard austerities in Badriban or in Badikashram also. ऐसे पुत्र रूपी महारत्न धन को, And he got this highest wealth of this son. और वह अपने जो कुछ हृदय धन जो है, So all the wealth he had in his heart, the Premadan, Vyasadeva, गोस्वामी जी ने अपने gave all the wealth that he had in his heart to his son, Vyasadeva. Oh, Shukadeva Goswami. Vyasadeva gave all the wealth he had in his heart, this prema, to his son, Shukadeva. Just like a father gives everything to his son. In the same way, Krishna Devan Veda Vyas, जी के कृपा से by the mercy of Narada, लीला रूपी कृष्ण लीला की जो प्रेम धन जो प्राप्त किया, Vyasadeva obtained that पुत्र wealth of Krishna Premdan, and he gave this to his qualified son, Shukadeva Goswami. श्रवण किया। So we heard already a lot about this regard. ये जिस कथा प्रसंग हम लोग श्रवण किया, भगवान ओपी तारात्रि शरद उत्फुल्ल मल्लिका भिक्षरन्तु मनश्चक्रे जोग माया उपास्यतम। भगवान शब्द के द्वारा ही So the word Bhagavan mentions Brajendra Nandana Shama Sundara, he who is Dhir Lalit Naika. और ओपी शब्द के द्वारा And the word Api also mentions, पूर्ण भगवान, refers that Krishna is Shada Swarja Purna Bhagavan, complete with 6 opulences. यद्यपि कृष्ण लोकवत्तु लीला Although Krishna is performing pastimes as like a human being, लीला कर रहे हैं, performing pastimes just like a normal human being, जो समस्त गुण उसमें परिपूर्ण मात्रा से he has complete all the qualities of being Bhagavan. ये हमने श्रवण किया। तारात्रि शब्द के द्वारा ये भी हम लोग श्रवण किया। So by the word Taratri, we saw करके that he saw all the nights. It's in the plural, in the plural. कहा गया So why is in the plural? जी कृष्ण जब ये लीला करने के लिए संकल्प की, When Krishna decided to perform these pastimes, 4 प्रहर वाली रात्रि जो है समावित एक ही समय में समावित हो गया। sorry, I didn't get that. आगे जाकर के भी Because later, 33 अध्याय में जाकर in the के 33rd chapter, स्पष्टीकरण कर देंगे it will be clearly explained how actually कितने Krishna, समय तक Krishna for how long he was performing the Rasa Leela. ये कृष्ण कितने समय तक उपावृत्ति है, यानी कृष्ण जो रास किया कितने ब्रह्मा रात्रि ऐसे बीत गया। Many nights of Brahma had passed लगते हैं जे सामान्य in his Rasa Leela. Looked like it was something ordinary. कल्पत्ते इसको कहा जाए खनत्व माना जाता है, क्योंकि महाभाव आदि दशा में So in the stage of Mahabhav, one of the symptoms of the Mahabhav stage is that विरह में खल in the separation, when they're feeling separation, खनत्व होता है। then even a moment feels like a kalpa, feels like a millennium without Krishna, समय बीतते जा रहे हैं you know. और मिलन के समय होता है And when they meet Krishna, when they're meeting him, अनेक even many nights of Brahma, they feel like it's only काल हो गया। a second, only an instant. संसार के विचार हम देखें So if you analyze also in this material world, when we are suffering something, ऐसे लगता है also we feel that the day is not passing by, like the time is not ticking, you know, not passing. This is true. और जब सुख के समय होता है But when we are happy, अल्प समय हमें समय बीते then we feel that time is passing so quickly. Actually, the speed of the tick 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 of the arms of the clock, they are always moving in the same time, like in the same rhythm. They never change.
isn't it? तो बस 24 घंटे में एक दिन और एक रात्रि हो जाएगा 24 hours is one day and one night. रात और 12 घंटे 12 hours the day, 12 hours in the night. है। किंतु हमारे मन में ऐसे प्रतीत होता है जो जल्दी ही ये समय चला गया But in our mind, सुख के समय लगता है समय जल्दी ही so when we are happy, it और feels दुख के like समय लगता है जो समय नहीं जा रहे हैं किंतु बात ये सत्य the नहीं time is going so quickly, and when we're unhappy, it looks like the time is not moving. Seems, but actually, it's only our perception. It's not true. वास्तव रूप में क्या है क्या So, but this Taratri, this Puro in the nights, actually, really, the meeting of Krishna and the gopis really took a lot of time, like Sudirga Kal. They really stayed together so long time. They stayed together so long time. जोग माया ये लीला को संपादन अधिक कर रहे हैं Gatayani, because Jogamaya, who arranges all these leelas, she makes the impossible possible. ये जोग माया नाम की अपने घटन अघटन पटियसी शक्ति के आश्रय कर भगवान गोपियों के साथ लीला करने की मिलन की रास करने की अभिलाषा की So Krishna desired to make this amorous pastimes with the gopis. करने की मनस चक्र के द्वारा अपने मन में So, अभिलाषा की with his mind, Krishna had this desire. So one word also we discussed about the word that actually the shloka is in the Atmanipad, meaning like first person, like himself. इस शब्द के द्वारा Rantu Manas Chakra, रंतु मनस चक्र Viksha Rantu Manas Chakra. This verse is 10th canto, 29th chapter, आत्मा ने first verse. प्रयोग हुआ है According to the Sanskrit, this is in Atmanipad. तब होता है Atmanipad is like, अनुसार according to the Sanskrit, the Atmanipad. प्रकार की पद होता है So two kinds of pad. होता है और एक Atmanipad, परसंग पद होता Parasamipad. है आत्मनि पद तब होता है जब कर्ता So Atmanipad is like when the होता है agent of the action is the subject. संस्कृत में आत्मनि पद So the subject of the sentence is the agent of the action. But Paraspanipad is that when कर्म के सुख भोग नहीं कर रहे हैं you were प्रति के लिए करते हैं उसमें कहा making something for another person, then this is Parasparanipad, क्योंकि यहाँ पर Sanskrit grammar. विक्षरंतु मनश्चक्रे So when he say Vikshamanu Manaschakri, प्रतिपन्न हो रहा है he is establishing that कृष्ण स्वयं आत्माराम Krishna, काम होते हुए even though he is Atmaram and Aptakam, सुख के लिए गोपी for his own happiness, विहार कर he is performing, he desired to perform the amorous pastimes with the gopis. मिलन की दो कारण हो सकता है So the meeting can happen for two motivations. One, because for your own happiness, other also to give happiness to the other person. सुख के लिए होता है So you can, for your own happiness, meet, and also to give happiness to the other person. कृष्ण जो रास विहार गोपियों So के साथ Krishna, जो है इसमें दिखा he performed the rasa with the gopis for his own happiness. We see in this verse. गोपियों की सुख के तरफ नहीं ध्यान दे करके अपने सुख के ही He didn't give attention to the happiness of the gopis, but instead to his own happiness. Why? ये विषय वस्तु आ रहे हैं Something. गोपियों की सौंदर्य माधुर्य स्वस्वरूप Why? Because actually the gopis are so beautiful and amazing. है, कृष्ण से भी कम नहीं They're nothing less than Krishna. कृष्ण के सौंदर्य माधुर्य The sweetness of the gopis, सुंदर their sorabha. Sorabha means the fragrance of their body, सौसर्य the sound of their voice, like स्वर the voice of the gopis are so beautiful. कृष्ण भी जैसे मधुर स्वर है Krishna has a beautiful sweet voice, कि गले के स्वर but the voice of the gopis is nothing less than the voice of Krishna. Like they are also amazing, beautiful, and in all matters. मिलन के लिए इतने That's why Krishna was so eager to meet with them, because do you understand? ये कृष्ण Because गोपियों के साथ मिलने के लिए इतने उत्कंठित क्यों हो why Krishna was so eager to meet the gopis? Why है was he so eager? आज Do you understand? दूसरी एक विषय होता है Another point also is that प्रेम की दो पहलू प्रेम की दोनों तरफ में आता है prema is like two ways. एक हाथ में ताली नहीं You cannot clap with only one hand. है you cannot make claps with one hand. You cannot make claps with only one hand. Two hands. Then you can make the Need two hands, then you can make the clap. This is true. तात्पर्य किसने कह रहे हैं ये उदाहरण इसलिए दे रहे हैं जिस प्रकार गोपियां कृष्ण So this example is given. मिलन के लिए प्रबल उत्कंठित हो रहा है
The gopis were really eager to meet Krishna. In the same way, Krishna also, even though he is Atmaram and Aptakam, he was also so eager to meet the gopis also. Why? Because actually the gopis are so beautiful, so amazing, have so many qualities, like so fragrant, their voice is so amazing. Actually the gopis are nothing less than Krishna, like their beauty, their qualities, they're nothing less. Actually you can even say that the gopis are more beautiful than Krishna, more pretty, more gorgeous, more beautiful voice, more nice qualities, more nice fragrance. This is giving me obstacle, this pillow. So because they are more pretty than him, that's why Krishna is eager to meet the gopis. Krishna is eager to meet the gopis. Rupa Sanat. So although in the Srimad Bhagavata, Shukadeva Goswami Pad, in the 10th canto, from the first canto, 10th canto, first chapter into the 20th canto, 10th canto, first chapter into the 20th chapter, Shukadeva Goswami didn't speak about the gopis, but in the 21st chapter he started describing about the gopis, their purvarag. In the 21st chapter of the 10th canto Venugita, that's when Shukadeva Goswami started speaking about the gopis. And then we see how the gopis, they were so eager to meet with Krishna also. And their family members, like the gopis, were making obstacles for them to meet Krishna, because they were telling them, you are already grown up, so it's not proper for you to mix with Krishna and play along with him. The friends, boys, they play separately, and the girls should play separately now. Family of the gopis told. Like in the Gaudiya Math also is like this. Okay, the parikrama. So the girls are doing separate parikrama, and the boys also do separate parikrama. Tulsi parikrama or mandir parikrama. In Kartik we do separately. There are so many people. If it's less people, then okay, we make together, girls and boys. If only 15, 20, 30 people for the Mandari Parikrama, then we do together, okay. But when there are many people, then the girls do there, the Parikrama, and the boys, they do here. So in the same way, something amazing we see also, that the parents of the gopis told them, now you've grown up, so you should not meet freely. You don't know what is abad. You should not meet freely with the boys. It's not proper, because according to this culture, it's good to have this differentiation between girls and boys. This will be good for the society, the separation between girls and boys. In the Western countries, they don't have these rules. They can mix freely, the boys and girls, or young boys, young girls, everyone. So they mix freely. But according to Indian culture and Asian culture of India, when you grow up, like when the child is like already a girl and like growing up, you have to differentiate and separate boys and girls when they are growing older. So now parents of the gopis told them, their parents told, it's not proper for you to play mix freely. Then this love and affection that the gopis had since they were born, they had this love for Krishna. So now there was an obstacle for their meeting and for their love. So that's why the eagerness that gopis had for Krishna increased even more. Because the more there are obstacles, the more you will be very eager to attain that thing. The more there are obstacles. Isn't it? This is a psychological effect. That's why in the Western countries, the psychologists, they say
भाई तुम यदि ज्यादा कर दो वो अधिक जो है रूप में वो प्राप्ति करने के लिए वो उत्कंठित होंगे, क्योंकि जो वस्तु सहज साध्य रूप में प्राप्त हो Something which is prohibited is something you desire more. इतना रुचि नहीं रखते। Though something which is very easily available, you don't have so much desire for that. But something which is difficult to attain or prohibit, then you have more उत्कंठा रहता। eagerness or desire for that thing. किंतु ये पाश्चात्य देशों के जो मनोविज्ञान, But this is psychological talk of the Western countries. क्योंकि Because जगत में जो है in the material world, actually, मन our mind has many kinds of सुख भोग आदि करना desires for material happiness and enjoyment. उदाहरण दे Bhagavatam gives the example, जिस प्रकार just like अग्नि में in the fire, यदि घी दिया जाए, if you pour ghee in the fire, अग्नि कभी the fire will never समाप्त नहीं हो जाए। end, क्या है? like extinguish. Actually, the fire will increase even more. सम्मति है, न जातु कामो कामेनो उपभोग्य सम्मति भविष्याभ्य भुव एव भी वर्धति, वो भी और भी बढ़ेगा। The fire will increase even more. पहले जो भी पाश्चात्य देशों के जो मनोविज्ञान जो हम आलोचना करते So we're discussing about the psychological talks of the Western culture, but it's not true completely, because actually समाप्त नहीं, the desire for enjoyment will never finish. The more you enjoy, actually, your desire will not diminish. तो उसी प्रकार इसलिए हमारे भारतीय मनीषीगण So that's why है in the Indian culture, विचार दे रहे हैं ये एकत्र मिलन उचित, they say it's not proper to mix freely with the opposite sex. जो हम Okay. प्रसंग में आ रहे हैं। Coming back to the तो katha, गोपियों के जब इसी प्रकार so when the gopis, they got this kind of पृथक कर दिया, discrimination, like the parents did discrimination, they couldn't mix with Krishna anymore, then gopis became more eager even to meet with तो Krishna. उस समस्त गोपियां क्या की, So all the अपने gopis, अपने गृह में रह करके they stayed in their कृष्ण houses मिलन की प्रबल चिंता आदि करने लगे। and they started thinking so much about Krishna. इसलिए उसने वेणुगीत में कहा रहे, So in the Venu Gita explains, जो गोपियां अपने अपने गृह में रह करके कृष्ण की सौंदर्य माधुर्य वन विहार आदि गोचारण की लीला को एक दूसरे से ही वर्णन करते जा रहे हैं, जो वेणुगीत में होते जा रहे हैं। इसी के कहा जाता है पूर्वराग। so in the Venu Gita, gopis are manifesting, showing this Purvarag. What is Purvarag? अथवा विच्छेद होने पर When you're separated, नायक नायिका एक दूसरे के then the lover and beloved, बल उत्कंठा they are so eager to meet with each other. करते हैं। So eager. पूर्वराग कहा जाता This is called Purvarag. है। साधारण रूप में पूर्वराग होते हैं मिलन के पहले, Generally, Purvarag, we see that before the meeting, प्रबल उत्कंठा this great eagerness that you have to meet your beloved, it's called Purvarag. इस जगत में गोपियों But in the transcendental world, का ही है। actually the meeting of Radha and Krishna and the gopis and Krishna is eternal. मिलन हो अथवा That's why whether there is the meeting or not, एक दूसरे के साथ when मिलने के लिए they are very eager to meet with each other, है, उसकी पूर्वराग। this is called Purvarag. इसलिए गोपियां So अपने अपने गृह में अवस्थान करके the gopis, they were staying in their houses, है, कृष्ण की कथा जो है एक दूसरे से वर्णन करते जा रहे they were telling Krishna Katha to each other. हैं। यहाँ पर जो हम जो वर्णन होता है जेरोन्तु मनश्चक्रे, जिस कथा को हम श्रवण कर काफी So दिन से for many days we've discussed this shloka 10.29.1. So this Atmanipad means Krishna wants to do for his own happiness, for himself he wants. Even though Krishna is Atmaram and Aptakam. है कि नहीं, क्योंकि गोपियों की सौंदर्य माधुर्य Why? सौंदर्य Because the beauty of the gopis, कृष्ण से their किसी प्रकार qualities is nothing less than Krishna. हम उसी के प्रति धावित होते हैं। हमसे कोई अधिक For example, if someone is better than us, है, रूपवान हो गुणवान like हो, better than us in qualities, in beauty, if someone is better than us, हम धावित होते हैं, then we become like impressed by them, उसके तरफ हम चलते रहते attracted by them. हैं। अथवा हमारे मन की भांति कोई But if someone वस्तु के व्यक्त करें, मैं जो सुनना चाहता हूँ, explains something like something that we want to hear, and हमारे मन की भांति कोई बात बोले, तो अब उस कथा श्रवण आदि में हमारे रुचि हो जाता है। also if someone describes something that just like कथा श्रवण also आदि में रुचि कब हो जाता है? like हमारे मन when we have की बात taste का है। in some katha, if someone tells what we are thinking also, like if someone tells something according to our also thoughts and opinions, so if we don't listen our कथा में हमारे
में रुचि नहीं। kata of our mind means if you don't listen to our same opinion and our same thoughts in what the person is speaking, will not have so much taste to that. For example, for the karmis, if you tell them about karma, they'll like it because they want to listen, hear about karma. If you speak to a Gyani about Gyan, he will enjoy, he'll be interested because he wants to hear about that. And for a devotee, if you speak about bhakti, the person will be interested also. The devotee will be interested. So depending on the taste of the devotee, of the person, like whatever he likes to hear, he'll be happy to hear what he likes to hear. Another point, depending on the rasa also, you have happiness hearing the katha about that rasa that you have. So when the sadhaka comes to the stage of ruchi, then the sadhaka will have some abhas of his swarup, some semblance of his transcendental form. So after nishta ruchi, then after the ruchi ashakti, and after ashakti bhav, then prem comes. Do you understand? Just like an example is given, Kavi Karnapur, he gives an example. In the youth, like when you become youthful, automatically you become attracted to the opposite sex, automatically. This is natural. This is natural or not? This attraction to the opposite sex. Because this is the dharma of this body and of the mind. Sorry, so that's why Kavi Karnapur said, a young boy and a young girl, in a blink of an eye, like a young girl, with a blink of an eye, she can capture the hearts of a young boy, young man. Isn't it? But the same young girl, like young woman, she will not be able to capture the heart of a child. Why? Because the child is not yet manifested these romantic desires. Do you understand? So that's why the young girl, young woman, does not attract the child. She may try to show many, like to attract the boy, a child, with her like behavior or something, but the child won't be attracted to her. Will he? No. Because he doesn't have any knowledge still about love, and he doesn't have attraction to these things, romantic things. But the same child, when he, male child, a boy, when he grows older, he becomes a young man, then only by looking at the woman, her eyes will captivate him. So, in the same way, the sadhaka performing bhajana slowly. When you come to the stage of ruchi, then you will feel so much bliss hearing the katha, that katha specifically. Speaking also will feel bliss, and to hear also will feel so much happiness. Hearing and speaking that katha. Just like when you're hungry, you enjoy to eat so much, like it's so delicious to eat when you're hungry. But if you're not hungry, even though you might have so much food in front of you, you only see the faults. Who cooked this? Who has cooked this? Who cooked? This is the first question. Second, there's too much salt, this problem, that problem, this food. But if you're really hungry, whatever you cooked is amazing, delicious. So you won't have discrimination. Everything's delicious and tasty. When you offer to Bhagavan, delicious, wow. My Gurudeva Srila Vamana Maharaj, if someone asked, Gurudeva, what was in the subject today? Did you offer to Bhagavan? Like, did you like it or not? Then Srila Vamana Maharaj said, if you already offered to Bhagavan, how come you can say that it's good or bad? Yeah, actually to glorify prasad is good, because we offer to Bhagavan, so okay to glorify, but not to see the faults of a prasadam. The thing is the remnants of Bhagavan. Mahaprasada is the remnants of Bhagavan. How come you can see the faults? Is this true or not? So my Gurudev used to say this.
जो उत्तम कोटि के भक्त हो जाते हैं A devotee who is a uttam, उसमें दोष ही नहीं दिखे नहीं he'll not see any faults in the prasada, only qualities. है कि नहीं? Isn't it? जब वो मध्यम में रहता है But if the person is still Madhyama, he'll have this discrimination. छोड़ दिया जाए And the Kanishta, what to speak of the Kanishta? वो गुण भी दोष दिखता है The Kanishta, कनिष्ठ में क्या even if something has quality, the Kanishta only see faults. मध्यम में विचार करता The Madhyama, he has discrimination. और उत्तम में And the Uttam, है दोष को गुण देखता है he even see a fault being as quality. And he also, only qualities are there in him. और बात ये सही है कि नहीं This is true or not? है? अब मेरे यही कहने की तात्पर्य ये जिस कथा प्रसंग में आ जाए समय अतिवाहित होते जा रहे हैं Time is passing. I just want to say, यहाँ पर आत्मने पद के द्वारा इसलिए कि कृष्ण स्वयं ही क्या गोपियों के साथ मिलन के लिए भी उत्कंठित हो रहा Krishna is eager to meet the है जिस gopis. प्रकार गोपियां कृष्ण के लिए मिलन के लिए उत्कंठित हो है उस प्रकार कृष्ण भी गोपियों के साथ मिलने के लिए उत्कंठित हो रहा है So Krishna is so eager to meet the gopis also. विचार जो विषय है So there is one point here. जड़ जगत और चित जगत की एक विशेष वैशिष्ट दिखाता है A speciality of the spiritual world and the material world. पुरुष के मिलन की उत्कंठा अधिक व्यक्त होता है चंचलता प्रकाश होता है Generally, men are more restless. आ जाता है अरे हरि कथा तो सुनने की इच्छा नहीं You don't want to hear Harikatha? कोई जरूरत नहीं इधर बैठ जा I don't need this. Sit here. Listen to Harikatha. कथा होती है When Harikatha is going on, करना नहीं है you should not do anything. हमें भी गर्म लग रही है ठंडी लगे हमें पता भी नहीं लगता है I don't even feel if I'm feeling hot or not. तब गर्म ठंडा लगता है After Harikatha, then I feel hot or cold. During Harikatha, I'm not feeling. हवा आ रही है Because I'm not even thinking if there's wind or not. Because when I speak Harikatha, I'm so absorbed. चलन में मैं स्वयं भी भूल जाता Actually, when I'm reading something or studying, I even forget if they see, or when I'm writing also, गर्मी होने पर भी even though it's so hot, चलने भी I even forgot to turn on the fan. What to speak of AC? Because I'm completely absorbed. पहले जो कुछ करना है कर दो पंखा So whatever you have to do before the Harikatha starts. शुरू हो जाए Turn on the fan, the AC, whatever. But in the middle of Harikatha, don't do anything. हाँ क्या बोल रहा था So I was talking about प्राक नहीं नहीं उत्तम नहीं कहते आप प्राकृतिक जो शब्द जो कह रहे हैं ये इसमें जो है पुरुष में अधिक चंचलता प्रकाश होता generally men are more restless है मिलान के लिए for meeting the beloved. अधिक चंचलता The men become more restless to meet the beloved. क्या होता है The women, वो चंचलता के कहते हैं गुपन they hide their restlessness or they also want to meet the beloved, प्रच्छन्न काम but the women they cover their love. प्रेम वो प्रेम क्या होता है So they cover the love, the lust. क्या हो जाता है प्रकाश हो जाता But men, they're showing out more with their feelings. है किंतु अपराकृत चित्त जगत में उसके उल्टा But in the spiritual world, it's opposite sometimes. है अपराकृत चित्त जगत In the spiritual world, चंचलता भी प्रकाश हो रहा है the gopis are showing this restlessness. के द्वारा ही तो हो रहा है This we see in the Venu Gita, for example. वेणुगीत में कृष्ण के साथ मिलन के लिए गोपियां कितने तड़प रही है So gopis are so eager to meet with Krishna. And they are प्रत्यक्ष रूप में sometimes directly, sometimes indirectly. ढक नहीं करके They are showing their moods. Sometimes they cannot cover their moods and they're just showing out. I mean, exhibiting what they feel. परोक्ष बाद के तक So in the Venu Gita, नद्दस तथा तदुपाधार्य मुकुंद गीतम it's telling indirectly sometimes. आवर्तो लक्ष्मी तो भवभग्न बेगा आलिंगन उसने उनकी भुजोई मुरारी है क्या गृणंति पादो जुगलम कमलोपहारा ये परोक्ष रूप में कह रहे देखो गोपियां कह रही हैं देखो So the gopis are saying, मनसी गंगा आदि की धारा कैसे देखो look at the Jamuna and Manasi Ganga. छुपा कर इसको कहते हैं अवहिता भाव So the gopis, they are hiding their moods. अवहिता भाव किसको कहा जाता What is a Bahita है Bhav? भाव को छुपा कर The gopis are hiding their bhavas and they're like applying these to others. Like they're like showing, इसलिए श्रीमद् भागवत when they speak about others, actually they're speaking about themselves. दो ग्रंथ है वो So before reading the Bhagavatam, you have to study two books, then you can understand. विषय जो आपको Then you can understand सहज रूप में easily the Bhagavata Katha. भक्ति रसामृत सिंधु और So the Bhakti Rasamrita Sindhu and उज्जवल निर्मणि ग्रंथ Ujjwal Nilamani. ये दोनों ग्रंथ यदि आप These both books, अच्छे तरह से अमल कर लिए if you study them very nicely, पढ़ना बस then सहज it will be very easy to understand the Bhagavatam.
अवहिता भाव, गोपियों अपने भावों के छुपा करके So the gopis hid their bhavas, their दूसरे के moods, ऊपर आरोप करे। देखो सखी, and they're like imposing in others. Oh my Sakhi, look at this river, how the Jamuna river is serving Govinda. वो भाव हो अथवा नहीं हो, This bhava might be in the river or not, but that mood is in the heart of the gopis, and they are applying, like imposing this mood to the river. Like, oh my Sakhi, look, वेणुगीत श्रवण कर hearing the sound of Krishna's flute. मानसी गंगा और यमुना की धार प्रवाह को देखो कैसे। See how the Manasi Ganga and the Jamuna are flowing. ना देखो मुकुंद के वेणुगीत श्रवण करके Hearing the sound of Krishna's flute, यमुना की जलधारा जो है the water of the Jamuna स्थगित हो गया। स्थगित तो उर्मई भुजई मुरारी। stopped moving, stopped flowing. देखो गोविंद की है मिलन के लिए माने To meet Govinda लंबी भुजाओं के द्वारा with her long arms यमुना means Jamuna Devi, यमुना मतलब मानसी गंगा Manasi Ganga, अपने बड़े बड़े लंबी भुजाओं के द्वारा with her long arms. उर्मी उर्मी माने Long arms means her waves. अच्छा यमुना की भुजाएं क्या है, लहरियां जो है, ये लहरियां देखो क्या कर रही हैं ना गोविंद के What the waves are doing. के लिए कैसे उत्कंठित हो रहे हैं, They're eager to आपको की गोपन करके उसके ऊपर आरोप करा, इसको अवैध तवाब करे हैं। meet Krishna. Actually, the gopis are eager to meet Krishna, and they're applying or imposing their moods in the river. मुकुंद के वेणुगीत श्रवण करके Hearing the sound of Krishna's flute, मानसी गंगा Jamuna Manasi Ganga, भाव देखो, look at their moods. अर्थात अपने भाव को जो है छुपा रहे, So अपने they're- हृदय में है, किंतु आरोप किसमें कर रहे हैं, So they have this in their hearts, and they're applying or imposing to Jamuna. मुकुंद गीतम। इसके बाद आवर्त लक्ष्मी भवभग्न बेगा, आवर्त लक्ष्मी वो आगे से प्रवाहित हो रही है यमुना, So the Jamuna is flowing आ रही है from up, किंतु आगे नहीं जा रही है। but the Jamuna is not continuing flowing. Why? दर्शन व उसके Because- आलिंगन के लिए To embrace Krishna and to see Krishna, Jamuna is stopped in one place only and is like in a whirlpool and doesn't want to leave. मानो गोविंद के द्वारा उसके गोविंद के विनुध्वनि के द्वारा उसके मन क्या हो गया, अपहृत हो गया, So her mind is stolen by Krishna. इसलिए आगे नहीं जा रहे। That's why Jamuna is not continuing flowing. आलिंगन करने के लिए And Jamuna wants to embrace Krishna and is so eager to embrace और Krishna. इसमें अब भी और भी गोपियां करें, देखो And the gopis also saying, गोविंद उस समय मानो है वो समस्त नदियों के प्रति कुछ ये कर रहे हैं, क्या बोले नेग्लेक्ट जिसको कहा जाता है, क्या बोल रहे हैं, नेग्लेक्ट कर रहे हैं, अवहेला कर रहे हैं, इसलिए Krishna is neglecting नदी की जो the river. That's why क्या कर रहे हैं, the current stream of the river wants to meet Krishna and उत्कंठित हो रहा है। so eager. पर कैसे समझ में, How? How do you know? क्या करें, कमलोपहारा Because the river is giving this व्यक्ति हमारे ऊपर रुष्ट हो जाए, this present, these gifts of the lotus flower. So if someone is neglecting क्या us, करना पड़ता है, or if someone is उपहार दे दो, upset with us, then we can give a gift to that person to like make up to him. दे दो, Give a mango, give a tulsi leaf, give a flower, that person will become happy. This is true or not? हैं? अच्छा बात सही है, This is true or not? कोई हमारे ऊपर If someone is not happy with us by some reason, प्रसन्नता करने के लिए कुछ उपहार दे we दो, have to give some gift to this person. है, हाँ समझे, एक Understand? मौका दे दिया, देखो वो प्रसन्न हो जाता है, कुछ भी दे दो, यदि आप सोचे वो हमारे, यदि आप सोचो Give a garland. If you think that the person is प्रसन्न नहीं हो, not happy with you, किसी कारण हो, by any reason, with cause or without cause, उसके प्रसन्नता करने के लिए then हमें क्या करना to पड़ता है, please that person, उपहार दे दो, give some gift to that person. वो अपने आप आपके साथ बात करना शुरू कर दे, Then the person automatically will start talking to you. बात ऐसे ही की नहीं This is true or not? है, समझ में आ रही है, Do you understand? Começa a suar. तो उसने गोपियां उसी प्रकार कर रही हैं, So the gopis are देखो saying, ये नदियों के प्रति कृष्ण क्या कर रहे हैं, so अवहेलना कर रहे हैं, Krishna is like neglecting the river. गोपियां क्या कर रही है So the river ना, is अपने offering भगवान के उपहार कैसे दे रहे हैं, a gift to Krishna, the lotus flowers. जमुना देवी जो आवर्त भव देगा है, उसके आवर्त से जमुना में जो प्रस्फुटित कमल को क्या किया, So the Jamuna is offering भुजाओं के दर्शा उर्मी के द्वारा with her waves, वो कमल के उठाया, taking the lotus flowers and offering to the feet of Govinda. गोविंद कितने प्रसन्न हो गए, Govinda is so pleased. है
भगवान के एक पुष्प को ही चढ़ा दी So if you offer one flower to Bhagavan, Bhagavan becomes pleased. है कि नहीं? Isn't it? कुछ भी करो, इसलिए तो भगवान कर रहे हैं पत्र पुष्पम फलम तोयं जो में भगजा प्रचच्छ। अच्छा, कोई भी That's why Bhagavan explains, you offer to me food, flower, don't come empty-handed. है कुछ तो लेकर के आज Bring something. घास लेकर गया, Bring a flower, bring a leaf, tulsi leaf, or bring a grass, piece of blade of grass. भक्ति पूर्वक Just पत्र पुष्पम फलम making some fun, देखो, but give with devotion. He will be pleased. कोई भी व्यक्ति आप Any person is not pleased with you or is neglecting you. If you think that the person is doing this, उनको कुछ उपहार दे दो, give some gift to the person and the person will become pleased. वो गोपियां उसी प्रकार कर रही है। So the gopis are saying also, क्या कर रही है? what they are saying. अब भगवान भी, अब उनके मन भी कैसे हो गया? How is their minds? बस एक तो चला गया, They lost their इसको minds. जान ही रहे, अर्थात जमुना की जल प्रवाह जो है So the water of the Jamuna is not flowing इसलिए उत्कंठित हो रहा है। because the Jamuna is so eager to meet Krishna. तो मैं जमुना देवी देखा, कृष्ण In the end, Jamuna Devi saw, oh, क्या किया? कमलों को हारा, कमल को ये जमुना प्रसन्न, कृष्ण प्रसन्न हो गया है। इसकी और जो कथा, जो गुड़ कथा अभी अधिक नहीं बताएंगे। offer the lotus flower. उनके हृदय रूपी So what is the lotus actually? It's the lotus of the hearts of the gopis, गोविंद, like the breasts of the gopis, offering to Krishna. चलो आगे की कथा Anyway. यहाँ पर जो कहते हैं भगवान, इसके द्वारा हम जो कह रहे थे इसलिए कह रहे हैं, अपनी पद के द्वारा कृष्ण भी प्रबल उत्कंठित हो रहा So if this Atmanipad, this course of the Sanskrit grammar, indicates that Krishna is also so eager to meet the gopis. योगमय उपासिता भगवान जो लीला आदि करें घटन अघटन पुटियसी योगमय के द्वारा ही And Krishna performed his pastimes with Yogamaya, Agatan, Ghatan, Patyasi, Shakti. है। टीकाकारों की जो So there are many kathas, many commentaries. अभी द्वितीय श्लोक में हम भी कुछ आप लोग के निकट भी है, हैं? द्वितीय श्लोक में क्या है? So let's go to the second shloka. तद ऊडु राज कुकुभ करेर मुख प्रच्छा विलंब तोरुणेन संतमय सचर्षणं दारुगुच्छुतो मृजं प्रिय प्रिय इव दीर्घ दर्शनम। बहुत सुंदरी So beautiful this verse. है। उस समय At that time, सुदीर्घ काल के पश्चात प्रवास के घर में लौटा हुआ पति जिस प्रकार अपने प्रियतमा के मुखमंडल को कुमकुम रंग से so रंजित second करता है, verse, उसी 29th प्रकार chapter. तारकापति चंद्र पूर्व दिशा रूप बुध के मुखमंडल को अपनी लाल लाल किरण से रंजित कर है जगत के लोगों का संताप हरण करने के लिए उदित। The moon then rose, anointing the face of the eastern horizon with the reddish hue of his comforting rays, and thus dispelling the pain of all who watched him rise. यहाँ पर चंद्रमा The moon was like a beloved husband who returns after a long absence and adorns the face of his beloved wife with red kumkum. तारकापति चंद्रमा कहा जाता है। So Tarakapati is तारका जो है this the moon, because there are so many stars and the moon is like श्रेष्ठ माना the best of all. Pati means the best, like best of all the stars. जाता है, उड़राज कहा जाता है। समस्त तारका में जो श्रेष्ठ है The best of all the stars. कहा जाए उड़राज, संस्कृत में होता है। In Sanskrit is called Ururaj. यहाँ पर भी एक सुंदर भी कहते जा रहे हैं। उड़राज शब्द की भी अनेक, जैसे बसंत काल को उड़राज। उड़राज कहा जाता है। So the spring season is also called Ururaj. टीकाकारों ने माधुर्य रस की भी According to Madhurya Rasa, the commentaries explain that Shringarasa is also called Ururaj, रसों की जो means चक्रवर्ती हो the जाता best of all the है, rasas उसको भी उड़राज is शब्द also called Ururaj संस्कृत में in Sanskrit. है। तो इसी पर यहाँ पर जो कहते हैं उड़राज यानी चंद्र है। चंद्र पूर्व दिशा को सुरंजित करते हुए So the moon was आशीष द्वारा, इसलिए तदु then rose, anointing the face of the eastern horizon with the reddish hue of his comforting rays.
प्राच्य कुकुभ, कुकुभ शब्द के अर्थ है पूर्व दिशा रूपी वधु के, है आसन, पूर्व दिशा रूपी वधु के मुख में क्या करें ना, कुमकुम के द्वारा सुरंजित करें, adorning the face of his beloved wife with red kumkum. अर्थात दर्शक प्राणियों के सुचताप ग्लानि को मृजन हरण करने के लिए उदित हुए। जैसे रात्रि काल में चंद्रमा उदित होकर के, Just like in evening time the moon rises, रात्रि काल में चंद्रमा उदित होकर के क्या करते, समस्त जीवों की तापों को क्या करते, and the moon हरण होता है, removes all the heats from all the living entities. So during the day there's so much rays of the sun, करके ब्रज में especially in Braj, भाव में during the day कठोर ताप होता है, it's so hot, और रात्रि काल में क्या होता है, and during night time, evening time is more शीतलता आ जाती cool, है। refreshment इसी comes. प्रकार पूर्णिमा के दिन, So in this way, on the full moon day, night, पूर्णिमा कौन सा पूर्णिमा था, so which Purnima was that? शरदीय पूर्णिमा, Sharadya Purnima, autumn season. But I also explained which kind of full moon. कहा जाता है। But कृष्ण जो शरद का कृष्ण जो गोपियों के साथ जो रास so when Krishna performed the Rasa Leela with the gopis, that Rasa Leela was called the Raka Chandrama. Raka Chandrama. कहा जाता है। यदि पूर्णिमा Raka Chandrama is that if on the Purnima Titi is full in the Purnima, and also क्या बोले on the day of Pratipad, also is the full moon is also full in the Pratipad, the first day. This moon is called Raka Chandrama. हो जाता है ना वो, So it's very big. तो इसमें कह रहे हैं देखो चंद्रमा क्या कर रहे हैं, So the moon अपने सुंदर किरणों के द्वारा, लाल लाल आभायुक्त किरणों के with the moons with her beautiful रंजित कर दिया। reddish hue is coloring the east direction. So Krishna thought, विवाह तो नहीं हुआ, I didn't marry the gopis, so how come ये शास्त्र विरुद्ध है। I will meet them? This is against the shastras. शास्त्र के प्रणेता होकर के I made the shastras myself. विरुद्ध कर्म कैसे How can I do something against the scriptures? Krishna thought. उसी समय मानो जोग माया So in this moment, Jogamaya मन में भी ये भी विचार दे रहे हैं, या भगवान हो, explained to Krishna, you are Bhagavan. भगवान जो होते हैं ये विचार के शास्त्रवाद के नियम के अधीन नहीं रहता है। Bhagavan is not under the rules. भगवान जो होते हैं वो कर्तुम अकर्तुम अनंत कर्तुम जो समर्थित भगवान अवच्छ है, आगे जाकर के भी स्पष्टीकरण कर देंगे। ये अत्यंत बलवान व्यक्ति जो कि कार्य So दोष नहीं लगता, if someone very powerful does something, there's no fault. तेजिया संग उपी न तो साय और संग भगवान जो है कर्तुम अकर्तुम, So Bhagavan himself, जो संग भगवान उसके दोष कहाँ से लगे, he cannot be with any faults. मानो जोग माया कृष्ण के हृदय में ये भी So Jogamaya inspired Krishna's heart. आप जो सोच रहे हो You are thinking that the gopis, विवाहिता नहीं, they are not married to you, and to meet them is illegal. But no, मत सोचो, don't think that, Krishna. भगवान है। You are Swayam Bhagavan. अब ये नियम के ऊर्ध्व में है, You are beyond the rules. रूल्स एंड रेगुलेशन है, आज समझ You are beyond the rules and regulations. है, और वो ऑनरेबल पर्सन है And also you're an honorable person. जिनकी चरण कमल में नतमस्तक होके जाए, Brahmin demigods, they are bowing their heads to you. कौन उसके क्या कर सकते हैं, इसलिए ये भी विचार भी दिखा रहे हैं। कहते आप यदि कहो तो इसलिए कह रहे अच्छा यदि ऐसे कहे तो अब उसमें जो मैं मानो कृष्ण के हृदय में ये भी प्रेरणा दे रहे हैं। And then, but Jogamaya also inspired Krishna's heart. ये देखो गीता में भगवान क्या कहा, What God said in the Gita. तो नेत्र जना सजत पावनम कुलते लोकस्तदनुवर्तते, श्रेष्ठ व्यक्ति जैसे आचरण करते Whatever a highest person do, all his followers also follow the same behavior. इसके तात्पर्य क्या है, What is the meaning? इस वंश में प्रकट हुए उसके वंश Krishna, you appeared in the dynasty also called Chandravamsha, the dynasty of this moon. But look what the moon is doing, Krishna. इंद्र के पत्नी दिशा के मुख पर मानो Indra, the wife of Indra, Disha, what happens? Chandra, the moon, is coloring the face of Disha, the wife of Indra, with kumkum. दोष नहीं लगता है, So it's not your fault. It runs in your blood. It runs in your family to do this क्या जी। kind of things. अच्छा बात ये सही है कि नहीं, This is true or not?
तो उसी प्रकार ये समस्त विचार दिखा रहे हैं। ये पूर्व दिशा जो है ये किसको माना जाता है? So the east direction is the wife of Indra, उसके किरण के द्वारा उसके and Chandra कर रहे हैं, कुमकुम लगा रहे हैं। इसलिए उनके was applying kumkum आपके दोस्त क्या होगा? in the east. गोपियां तो अपना ही है। एक्चुअली गोपियां क्या कृष्ण के शौक ही Actually, the gopis are actually Swakhiya. They belong to Krishna. अपनी संपत्ति है। They are Krishna's wealth. अब ये मेरा सौख्य धन है। Like this is my money, my wealth. पर क्या होता है? ये पर दूसरे के धन। Parakya is like a wealth that belongs to others. But Parakya also, para means highest, संपत्ति है। your highest wealth. क्योंकि सौख्य भी ले लिया पर So, but if you think about Swakhiya, Parakya, actually gopis are always his. Even if you think about meaning of Swakhiya and meaning of Parakya. जो रस आस्वादन करने But still, to relish Madhurya Rasa, विशेष माधुर्य, we see the special sweetness of Parakya. क्योंकि उसमें परक्यात्व में ये जो चार जो अमोघ Because in Parakya there are 4 infallible weapons. स्मरण कराते हैं। Again and again I tell you to remember, to remind you of that. What are these 4? एक तो होता है बाम्यता रहता 1, Bammata. है, बाम्यता, प्रच्छन्न कामुकता, दुर्लभता और Bammata, Prachanakamakta, Durubhata, and Nibaranata. परक्या So these 4 ही infallible weapons of the Parakya Ras. है। इसलिए यहाँ पर भी कह रहे हैं ये कृष्ण आपके दोष नहीं लगेगा। So Krishna, है, it's not your fault. It won't be your fault if you perform these pastimes with the wife of others. है, बहुत सुंदर इसमें है। It's very और beautiful. देखो, प्रिय प्रिय वो, है, एक दूसरे के साथ मिलन के लिए कितने उत्कंठित हो रहे हैं। They're so eager to meet with each other also. और दूसरी बात आपने तो Another गोपियों को point. वचन दिया You gave your word to the gopis. वस्त्र हरण के समय आपने तो गोपियों के वचन दिया। You gave your word to the gopis when you stole their clothes. पूर्णिमा में आप लोग That in the next समय पूर्ति करें। full moon of autumn you would fulfill their desires. इसमें गोपियों के When Krishna was 6, then he stole the clothes of the gopis. But when he was 7, he also wanted to perform Rasa Leela. But because of that कृष्ण के क्या करना पड़ा? गिरिराज धारण thing with Indra, इस साथ साथ में संभव नहीं। Krishna had to lift Giriraj. So when he was 7, he wasn't able to perform the Rasa Leela. वो गोपियों की मनोवांछा पूर्ण करे जो वचन दिया था। But when he was 8, आपने जिसको वचन दिया उसको पूरा he करना पड़ेगा नहीं? he had to fulfill his promise that he made when he was 6. If you give a promise, you have to fulfill it. वचन दिया तो पूरा करना पड़ेगा। So if you gave your words, you have to fulfill that. But if you didn't give your words, okay, you cannot take that word back. Just like in the Raghu dynasty, they prefer to die than to take back their words. रामचंद्र So we see that when Ramchandra, भरत लक्ष्मण सीता के साथ जब इसमें रहने लगे, क्या बोले? भरत मिलन की जहाँ पर हुई चित्रकूट में he came to Chitrakoot सभी लोग पहुंचे यहाँ पर कि to meet Bharat. भरत के माता Even the mother of Bharat, KK also was there. कहने लगे कृष्ण अपने विचार पर अटल रहे, स्थिर रहे। So Bharat Ram was fixed in his विचारों पर opinion, अटल रहे। completely fixed. के बात को मुझे I have to follow the order of my father. I must do that. Whatever happens doesn't matter, but I have to follow his order. प्राण जाए बुरु वचन ना जाए। They prefer to die than to break a promise. इतने ही कहने लगे भाई But Bharata told, oh my brother, कुछ भी कहो। you can say anything. बचपन में खेल कूद करते करते मैं हार जाने पर भी मुझे जिता देते थे। देखो भरत कितने कह रहे हैं, Bharata said, तो आज मैं हार ही जाए तब भी मुझे तो जिता दो। मतलब क्या है? तुमको अयोध्या जाना ही पड़ेगा, राज सिंहासन में तुम्हें बैठना ही पड़ेगा। you have to go to Ayodhya and sit on the throne. किंतु रामचंद्र अपने विचार पर अटल रहे। रामचंद्र सुंदर वचन करते हुए पिताजी But Ramachandra, वचन दिया, with beautiful words, he told, के पालन करना केवल मेरा कर्तव्य नहीं है, हमारे 4 भाइयों की कर्तव्य है। देखो रामचंद्र कैसे बोल रहे हैं। actually, 4 of us, we are responsible to fulfill the orders of our father. My father, our father gave the instruction that you should be the king of Ayodhya and I should be in the forest for 14 years. जब तुम हमें इतना ही कह रहे हो, ठीक है, If you're saying, okay, I'll become king after 14 years, ठीक है, okay, तुम जब देना चाहते हो, if you want to give me the kingdom, I accept it. किंतु 14 साल But after 14 years, वचन का हमें सत्य को हमें because we पालन have to करना है। follow the orders of our father. These our duties of all of us sons, his sons. कई ने क्या कही? So Kaikeyi said,
क्योंकि नहीं क्या, देखो ये जो वचन मैं ही Look, दिया but था, actually, I told this to your father, वापस ले लेता हूँ, so I'm taking back my words. I don't want these benedictions anymore. वचन देकर मैं वापस ले लेता हूँ। I'm taking उस back समय my रामचंद्र ने words. क्या कहा? Then Ramachandra said, वो समय अतिबाहित हो गया। "Oh no, but this opportunity has वो वचन passed दिया किसको आपने? because you gave your word to मुझे my तो वचन नहीं father, दिया। not to me. मुझे तो आप वचन नहीं दिया, वचन किसको दिया? You gave your word to my father, not to लेन-देन me. पिताजी के साथ हुई। So you could change only with him, not with me. लेन-देन जो है, Any possibility of राज्य में, change, सिंहासन में किसको बैठाना, किसको नहीं who बैठाना, was going to sit in the throne or लेन-देन not, आपके साथ this पिताजी के साथ decision हुई। you decided with my father. You asked to my जो father. वर, जो लेन-देन, वर माने So the benediction, है, जो वरदान जो है, वो लेन-देन आपके साथ, पिताजी के साथ, मेरे साथ नहीं हुआ। you didn't solve this with me, fix this with me, settle with me, but with my father. So देखो कितने रामचंद्र I just need to follow his words. वो वचन को निभाना ही So हम लोग की कर्तव्य है। our duty is to देखो, fulfill कोई the चीज़ जब orders करता of है, my तो father. क्या करता हूँ, वापस ले लेते, बोले वापस आप नहीं ले सकते अभी। So Ram told Koike, you cannot take your word back. If my father was still alive, then you could have changed. चलो मैंने आपको वचन दिया था, मैं वो वापस ले, I want to take back आपसे the जो benediction I मैं राज्य asked. दिया था, आपको ही राज्य में आपको वापस दे रहा हूँ, किंतु पिताजी तो अभी है ही नहीं। But now the father was not alive anymore. वचन जो है आपको पूरा करना ही पड़ेगा। So you have now to fulfill that thing you asked from वचन him. दिया, वो वचन को आपको क्या करना पड़ेगा, पूरा करना पड़ेगा, न तो यह लोग परलोक में भी शांति नहीं होगी, Otherwise, you'll not feel any कमी हो जाएगी। peace, not in this world, not in the next. You'll have to go to hell. So why did you give that word? Why did you promise that? कितने सुंदर, So Ramachandra gives such a beautiful Tata Siddhanta. उसी प्रकार कृष्ण So in this way, गोपियों के वचन दिया था, Krishna also had promised to the ये gopis. आगामी शरद पूर्णिमा में In the आपके next सब- autumn season, full moon, I will fulfill your desires. कि तुम सप्तम साल में तो गिरिराज गोवर्धन But when they were 7, when he was 7 the next year, के वचन की he had to lift Giriraj, all that thing with Indra, so he couldn't है, अर्थात गोपियों के साथ follow his promise. मिलन की ये कहते जा रहे हैं। बहुत सुंदर, इसमें ये तो बहुत This is बड़ा so हमने beautiful. श्रवण किया है। ये भगवान कृष्ण किस प्रकार गोपियों के साथ वो जो लीला आदि की किया। How Bhagavan Krishna performed many pastimes with. अभी हम The gopis. में आ जाते हैं। So now third verse. Third verse. Third. इसमें भी सुंदर विचार है। नवीन कुमकुम रंग This- से रंजित रमादेवी के Lord Krishna saw the मुखमंडल unbroken disk of the full moon glowing with the red effulgence of newly applied vermilion, करने वाले as if it were the face of the goddess of fortune. He also saw the Kumud lotuses opening in response to the moon's presence, and the forest gently illuminated by its rays. Thus the Lord began to play sweetly on his flute, attracting the minds of the beautiful-eyed gopis. मधुर तान छेड़ दी। कितना सुंदर है, So beautiful. कृष्ण क्या की घर से बाहर निकल करके आ गया। ये भी बहुत सुंदर रूप में वर्णन किया है टीकाकारों ने। So Krishna came out of the house, the commentaries explain. कृष्ण हर रोज मानो माँ जसोदा की कक्ष में ही शयन Krishna, करता every day he used to sleep in the room of Mother है। Jashoda. आज कहाँ शयन कर रहे हैं, अकेला Today he was sleeping alone. है, अकेला गृह में मानो शयन कर रहे हैं। जिस कक्ष में, गृह में, कक्ष में, In a room. He was sleeping alone in the room. यदि कक्ष में शयन करते Because if Mother Jashoda was sleeping also together, माँ जसोदा जग जाते। Mother Jashoda wake up and ask, "Oh, where are you going?" इसलिए कृष्ण कहाँ शयन कर रहे हैं, That's why Krishna slept where that night? अलग कक्ष में। In a separate room. कृष्ण ही स्लीपिंग इन सेपरेट रूम, डिफरेंट रूम है। ये भी लीला भी दिखा रहे हैं। और उस समय चंद्रमा की जो सौंदर्य माधुर्य मानो कृष्ण की कक्ष में आकर के इतने And the beauty of the moon came inside Krishna's room मुखमंडल की उनको क्या है उद्दीपना हुई and made Krishna remember the beauty of the gopis, the face of the gopis. गृह छोड़ करके That's why Krishna left that room किनारे में and came to the bank of the Jamuna. कहाँ पर आगे Where did he come to? नामक स्थान पर आगे To a place called Rasoli. पाद की विचार
प्रकार इसी प्रकार Jiva Goswami explains. कृष्ण पहले जो बंशी वादन किया, First time that Krishna played the वो flute, बंशी वादन के स्थान कहा जाता है, where was that place? रसौली नामक स्थान कहा A जाता place called है। Rasoli. अभी उसी लीला को स्मरण करने के लिए कृष्ण के To remember this Leela, the great grandson of Krishna, Vajranabh, यहाँ पर एक गांव he founded a village a little bit far from the Jamuna called Rasoli. रसौली गांव है, जिसके जो ब्रजवासी जो पुराने जो है, पूछो You can ask older Brajavasis, they know. इस तरफ कहीं होगा, It's in that side area. हाँ? क्या जी? नहीं Near Govardhan? No, Rasoli is like here, not so far. बिल्कुल नहीं है, यहाँ पर इस पार में होगा। Not Balvan, but in this side. हैं? हैं? वो तो गांठुली ग्राम ना ना, यहाँ पर जो है ये रसोली है, कई गांव है, है। So there is a village called Rasoli. कितने समय तक व्यतीत Because 5,000 years passed, so many things changed, no? किंतु तब भी उसी लीला को स्मरण कर But to remember that Leela, गोपियों की like the first time that Krishna वंशी बजा called the gopis and played the flute, रसोली नामक स्थान का this was in the place called Rasoli. This is the conception of Jiva Goswami Pad. आज समझिए, यहाँ पर भी वर्णन है, रसोली नामक स्थान पर आकर के कृष्ण ने क्या कि वंशी वादन किया है। कल्प विदेशी हरि कथा भी संभव है, सब वो तो वहीं पर था, रास हुआ, So there the Ras took place. तो उसमें कहते उसमें रास हुई ना है। और हो सकता है भगवान की लीला एक दिन तो लीला नहीं हुई है, अनंत काल अनंत लीला है, तथापि हमारे जीव So maybe for one day the Leela didn't happen नहीं तो and पड़ेगा। a limited time, many different Leelas. But what Jiva Goswami said, we have to accept. स्थान कौन सा था First time that Krishna called the gopis for the Rasa Leela was in the Rasoli Gram, ये a बताया specific है, place. इसमें है। It's also said. रसोली नामक स्थान में आकर के कृष्ण ने Krishna came to this Rasolic place इसलिए कहते दृष्ट्वा कुमुद बंत and he played the flute. रमा आनन भव नव कुमकम आरुण वनंच तत् है, कोमल भी रंजित, कोमल माने अत्यंत सुंदर, Komala means very beautiful, स्निग्ध चंद्रमा soft, के किरण के द्वारा smooth rays of the moon. वनराजी इतने सुशोभित हो रहे That forest was completely adorned by the moonlight. लताओं की व वृक्ष की क्या बोले झोरखा से, झोरखे कहते हैं ना, माने पत्र के द्वारा जो सामान्य जो स्थान जो खाली रहता है उसके ऊपर आकर के बन के जब पड़ते हैं उसमें देखने में The moonlight is falling on the forest through the leaves, you know, so some rays of the moonlight कैसे पड़ रहे हैं come to the forest वृंदावन की वन में or Vrindavan. पत्रों के द्वारा जो ढके हुए हैं And उसमें जो छेद होता but there are some holes or spaces between the leaves, right, from a tree, for example. So the moonlights, they come through this, they fall on the soil of the forest by these holes of between the leaves, like by these spaces that exist between the leaves. So it's so beautiful when the moonlight falls like this, and so beautiful. किरण So the moonlight सुंदर आकर is coming in such a beautiful way, and it's like adorning the forest of Vrindavan. सघन वन है, अनेक प्रकार के वृक्ष के द्वारा सुशोभित वन है, So that forest has many kinds of trees, अनेक प्रकार वृक्ष है, many kinds of वृक्ष trees. होने के नाते सघन हो गया, अंधकारमय हो जाता So है, it's like dense and dark because it's a forest with many trees. अथवा लता आदि के But बीच में जो between the leaves of these trees or the leaves of the creepers, की किरण there's some space between the leaves. So the moonlight is coming through these leaf spaces and coming inside the forest. So beautiful. लग जाता है, कितने सुंदर होते जा रहे हैं, So beautiful. तो सुंदर ही है, और भी चंद्र की किरण So the moons are so beautiful in the sky, and the moonlight's also coming and अर्थात चंद्रमा की किरण coloring the इतने forest. सुंदर निर्मल और इतने सुंदर जो है कुमकुम के द्वारा रंजित हुई है, And the वो वनराज moon क्या कर is दिया, also colored by the kumkum, and it's coloring the forest. सर्वत्र कुमकुम के द्वारा So everywhere is actually colored by the color of kumkum, vermilion. चंद्रमा जब उदित से So first of all, when the moon rises in the जब east, पड़ता है, when these इतने आनंददायक rays come, is so nice. जल में पकड़े, जल में ऐसे लगते मानो साक्षात किसी ने जो है When this लाल को मानो when this moonlight falls on the water, ये क्या बोले, moonlight that looks like someone has thrown gulal, like a holy powder, in the water.
यहाँ पर आपके ऊपर पड़े आपको ऐसे लगेगा If that moonlight also falls on you, you'll think that your body is colored by also gulal, holy powder. कलर जो होते जाते No, the kumkum powder. तात्पर्य क्या है ये जो रंग ये जो बता रहे हैं इसलिए बता रहे हैं कुमकुम कलर के तात्पर्य The meaning of kumkum powder, kumkum color, is actually a symbol of anurag, deep attachment. अनुराग की जो चिन्ह होता है ऐसे रंग हो जाता है This is the color of the anurag, कुमकुम कलर हो जाता है kumkum color. कुमकुम कलर अनुराग की जो जिसमें अनुराग के जो दो लक्षण जो बताते हैं 2 symptoms of anurag. What are the 2 symptoms? परस्परानु स्नेह बंधनम Parasparanu snehanu bandhanam. के द्वारा ऐसे अनुबंधन हो जाता You're completely bound to each other because of their love and affection. है with their love and affection इसे कहा जाता है परस्परानु स्नेह अनुबंधन This is called parasparanu snehanu bandhanam. अनुबंधन हो जाता है और दूसरी क्या होता है दर्शन में अतृप्तता होता है And also darshana triptata, another symbol, another symptom of anurag. दर्शन करे देखते रहे You're never satisfied to see the beloved. You want to continue seeing him again and again. में एक विशेष गुण होता है Because also Bhagavan has one special quality सर्वदा that he's always में प्रतिभाद होता है new, fresh form. इस जगत में संभव नहीं है Like every time more new and more beautiful, ever fresh. In this world it's not possible. दो बार दर्शन करेगा You see someone who is beautiful at once or twice, दर्शन करे then later say, okay, go away, like you're already fed up or you're already bored. वही जब And when that person becomes old, then oh my. जब बूढ़ी हो जाए When the person is young, okay, you want to see the person, but when the person is old, oh, get out of here. सही है कि नहीं This is true or not? किंतु भगवान में तो ऐसे नहीं है But the Bhagavan, this doesn't exist for him. God doesn't become old. The gopis also not. कृषांगी होकर के रहती है They always young and beautiful. आज में कमर पतली कृषांगी होकर के रहती They are kisangri, like they are slender waisted, so beautiful. है जिसमें मैंने कहा था गोपियों की सुंदरता Like का explains. वर्णन करते हुए सब गोपियों के क्या कहा जाता है पद्मिनी कहा जाता है All the gopis, they are स्त्रियों Padmini. के चार प्रकार होता है 4 kinds of women are there. संखिनी Padmini, Sankhini, Hastini, and क्या बोलता है पद्मिनी होता है ये संखिनी होता है संखिनी और एक होता है हस्तिनी so Sankhini, और एक Hastini. क्या बताया One more, भूल गया forgot. चित्रानी Chitrani. है कि पद्मिनी के जो रूप जो माधुर्य जो है So the form of Padmini is so beautiful, incomparable. एक दिन मैंने व्याख्या किया था मोहतरम The other day I spoke about it in Mathura. Anyway, continuing. अब अपने के देखोगे मैं कौन सा Otherwise, you'll think about it. Oh, which kind of woman am I? नहीं है ये This is not for you, actually. केवल गोपियों के लिए है। This is only for the gopis, these आज में kinds. अपने में आरोप Don't impose to you thinking about which woman you are. है तुम कहोगे मैं पद्मिनी है कि नहीं Am I a Padmini or not? नर्सरी क्या पद्मिनी कहा रहेगा Actually, you're in the material body and thinking you're a Padmini. भी नहीं होगा वो सब कुछ समय तक इसके बाद बुढ़ापा आ जाता है शरीर के धर्म आ जाता है But also you become old. This is the dharma of the body. भगवान और भगवान But की जो नित्य Bhagavan and his eternal associates, like the gopis, सब पद्मिनी की भी कहा जाता they're all है Padmini. चित्रानी This Hastini, Chitrani, and the क्या बताया संकीर्ण ये नहीं होता sorry, Shankini, एक ही कहा जाता है सब they are not for the gopis. Gopis are all Padmini. This kind of woman. आँख कितने सुंदर होते हैं लंबी लंबी आँख Their eyes are very long उभरे हुआ होता है and they are protuberant, जिसको कहता है पटल चेहरा चौक like patal chera. You know, like the parmal sabji. कमल की यदि लंबी कर Parmal is one sabji, I don't know in English. If you cut it in the middle, क्योंकि इतने सुंदर like in a long way, if you cut in the middle, then इतने सुंदर the eyes of the gopis are like this, elongated, comes until the ears. Their eyes are very long और क्या होता है and also पूरा हुआ ऐसे protuberante, बाहर होता like coming outside, coming out of the globe, like coming out of the, like very coming outside the eyes. है अपने को मत देखो Very beautiful, but don't look at your eyes and try to compare. No, I'm talking about the gopis. सुकेसिनी उनके And Sukesini also. वाले बाल होता है कहाँ पर चले जाते हैं घुटनों तक चले जाते हैं So there, you cut your hair, but इधर गोपी बनना चाहते but you want to become a gopi and you cut your hair, but the hair of the gopis come until their knees. हो नृत्य करना शुरू कर देते हो मैं You go to Seva Kunj and you start dancing, saying I'm a gopi, but you cut your hair. हॉलीवुड फैशन लग करके लगा देते हो हैं कृष्ण तुम्हें कर बोले अरे गोपी तेरे बाल कहाँ चले गया Ah, you want to become a gopi? Where's your hair? Oh, I cut my hair. Ah. होता है कैसे ऐसे नहीं इसलिए कह रहे हैं सुकेसी सुबेसिनी पद्मिनी चक्षु कर्ण रंध्रा
क्षुद्र कर्ण रंध्र, कानों के ये रंध्र जो है अत्यंत छोटा होता है, सुदीर्घ नासिका सुंदर होता है, And their वक्षस्थल जो है their chest, breast is very beautiful, हो जाता है, and the nose very इसलिए ये beautiful सब also. वर्ण होते जाए। इसलिए मैं इसलिए कहा था ये गोपियों की कृष्ण जैसे सदा सर्वदा नवनवान रूप में प्रतिभात होता है। Okay, so the eyes of the gopis are protruding अनुराग की चिन्ह कार्य or bulging. कह रहा हूं, ये अनुराग की चिन्ह होता है क्या? परस्परानु स्नेह बंधनम, और दूसरी क्या है? दर्शने So two symptoms of सदा सर्वदा नवनवान रूप में anurag means darshana triptata. They are never satisfied to see Krishna because Krishna is always manifesting a new form, होते हैं, ever fresh, beautiful form. ब्यूटीफुल हो जाता है। और गोपियां उसी प्रकार भी And the gopis also, अपने के सौंदर्य माधुर्य और भी बढ़ाते रहते they also increase their sweetness and qualities more and more. So it's like a competition. Krishna increases his beauty and the gopis, they increase 2 fingers more, also their own beauty. So they are having like a competition. कंपटीशन करते रहते हैं, Who is more beautiful? सौंदर्य माधुर्य कितना है, Who is more, has more qualities and more beauty? प्रेम की सौंदर्य माधुर्य उसमें लगते रहता है। चलो आगे की कथा सुना। इसलिए कहते हैं वनंचक तत्कोमलो गोभी रंजितो जगु कलम वाम दिशा मनोहरम। कृष्ण ने क्या कि वंशी धनी के छाछ क्या कर दिया, छेड़ दिया। Krishna played the इसमें ये flute. शब्द कर रहे हैं, देखो कलम, कलम शब्द के अर्थ है क्लीम शब्द। वंशी So जो the बीच sound of में the होता है, flute ये केवल क्लीम। is ये cling. शब्द कैसे बनते? क ल दीर्घ और एक बिंदी लगा देते हैं। So KLIM and one nasal sound also, bindi. दीर्घिकार श्रीमती राधिका। Ka means Krishna. दोनों के चुंबन आलिंगन कहा जाता है। This bindi, like this nasal sound, is actually the embracing and kissing of Krishna and the बार gop. बार नहीं कहेंगे। And the Shrimati Radhika, I'll only tell one time, not more. समझ में आते कि Did you understand or not? नहीं? अलग नहीं, एक ही व्याख्या है विश्वनाथ चक्रवर्ती This is का। the same commentary of Vishwanath Chakravarti Thakur. K means Krishna, L means happiness, दोनों मिलन Ananda, आनंद होता है। the happiness of the meeting between both of them. ईकार होता है ना। The letter E means Radharani. वामो दिशा इसलिए कारण वामो दिशा मनो Letter I, sorry, letter E, I, you know, I means Radharani. So who is in the left side of Krishna? Shrimati Radhika. जो हम लिखते So when we write cling, वाम दिशा में पढ़ रहे ना है, और ये बिंदी क्या नाद बिंदु का the bindi, like the nasal sound, like cling, like the M, देखना उसमें विषय is like the यहाँ पर होगा से embracing and kissing of Radha and Krishna. पढ़ता रहता हूँ अर्धसी जो है इसमें कहा है ये क्रीम शब्द जो है अतीव गूढ़ तात्पर्यमय है अधिक मंत्र के अधिक नहीं कर So, not also much, but cling is a very important, prominent mantra. चलो आगे कहते हैं, इसलिए कहते हैं कलम वामो दिशा मनोहरम। मनोहरम मन को हरण कर लिया। किसको मन हरण So कर Krishna stole the minds of whom? लिया? यहाँ पर राधा जी की मन को हरण कर He stole the mind of Shrimati Radhika. है। सर्वश्रेष्ठ जो क्या है राधा जी के मन को हरण कर लिया और शांति से समस्त गोपियों की हो जाता है। And also the other gopis also had their minds stolen. So if धनी के द्वारा Krishna, the son of the flute, is, stole the mind of the gopis of Shrimati Radhika in the first place, 50 किलो लेकर and of course automatically he also stole the mind of the gopis, because if you can, for example, lift 50 kilos, then it's very easy for you to lift कोई विशेष 10 kilos. नहीं है। So if Krishna can even steal the mind of Shrimati Radhika, then of course he also stole the mind of the gopis. So in this sloka is actually explaining indirectly that समस्त गोपियों की ही मन हरण कर लिया। actually with the son of the flute, Krishna stole the mind of all the gopis. कृष्ण राधा जी के जन्म के इसमें जो है कोई साधन सिद्धा होता है, नित्य सिद्धा होते हैं, Some were sadhana siddha, some nitya siddha. श्रुतिचरी मुनिचरी अनेक प्रकार ज्योतिकी अज्योतिकी है, अनेक प्रकार की गोपियों की Jyotiki, Ajyotiki, many kinds of gopis were there also. है क्या बोले पंचायती राज। कृष्ण सभी गोपियों के मन को हरण कर लिया। The gopis, Krishna stole the mind of all the राधा जी gopis. के जब मन हरण कर लिया तो और गोपियों की Because if he stole the mind of Shrimati Radhika, then it's like no big deal stealing the mind of other gopis as well. यहाँ पर कर रहे हैं ये जगो कलम वाम दिशा मनो हरम, मन को हरण कर है। तो गोपियां ने क्या की So the gopis, what did they do?
जब मन हरण हो गया, गोपियों ने किया कि अपने अपने गृह कार्य आदि को छोड़ करके They left what they're doing and they went running अपने मन रूपी वस्तु क्या हो गया, चोरी हो गया। because they had their mind इसकी प्राप्ति stolen. के लिए गोपियां दौड़ रही है। आगे जाके श्लोक में So the gopis were running to try to get their mind back. श्लोक में भी वर्णन होगा। निसम चौथे श्लोक में वही है, तो निसम गीत है ना। हाँ, निसम गीतम तदनंग वर्धनम भज स्त्रिय कृष्ण गृहीत मानसा आजो अन्न अन्न अलक्षित उद्यमा सजत्र कांतो जबलोल कुंडला। कितना सुंदर श्लोक है। This verse is so यह beautiful. महत्वपूर्ण श्लोक है। It's a very important श्लोक verse. के कितना सुंदर कर वर्णन करते जा रहे। ये श्लोक समस्त भागवत ये क्या बोले रासलीला की यही Actually, विशेष दिखा रहे हैं। this shows the specialty of the Rasa Leela in this verse. निसम्म गीतम अर्थात कृष्ण के वंशित ध्वनि सुन करके उनके So hearing the हृदय में sound of the प्रेम flutes, जो काम जो वो क्या this love the gopis had in their hearts increased. जो वस्तु सोए हुए थे Something that was sleeping before, like और dormant. कृष्ण के वंशित ध्वनि उसको क्या But when they heard Krishna's sound of the his flute, this like awoke. शेर सोया रहा था, सोता हुआ है। Just like if suppose a lion is शेर sleeping, को जगा दिया जाए, but if you wake up that lion, वो दौड़ता रहा। the lion will like run इसी and प्रकार गोपियों के हृदय में कृष्ण के प्रति जो प्रबल जो so in the same way. जो अभी मानो आच्छादित हुआ था, Now this love that gopis had was like hidden, but the sound of the flute उसको जागृत कैसे तो has अनंग awakened this. अनंग अर्थात प्रेम वर्धनकारी अर्थात काम के उद्दीपनकारी वह गीत अर्थात कृष्ण गीत को सुनकर वह अन्नो अन्नंग परस्पर अलक्षित एक दूसरे के नहीं देख करके अप्रकाशित जत्न से एक दूसरे को देखे बिना So without seeing each other, क्या करने लगे, the gopis were तो द्रुत गति से कृष्ण के ओर चलने लगे, जिसके running फलस्वरूप very उनकी कुंडल जो है कानों की कुंडल quickly to meet Krishna. So because of that, their earrings were swinging back and forth. चलने पर जिनकी कानों की कुंडल चंचल गति से चलवान हो रही थी, ऐसे गोपियां सजत्र कांतो, इसलिए कहते सजत्र कांतो, जहां पर अपने प्रिय कृष्ण विराजमान है। So the gopis went to meet Krishna where he was staying. इसलिए कह रहे हैं आजोगनु चलने लगे। कैसे जा रही है, अत्यंत उत्कंठा के साथ, एक दूसरे को देख नहीं पा रहे And they were going side by side, but they couldn't see each other. हैं, किंतु न पीछे न आगे न दाएं और बाएं किसी को दिखा नहीं पा रहे। उनकी एक ही जति जो है कृष्ण की तरफ जा रहे। They had only one goal, they were going towards Krishna. इसलिए कहते हैं उस अनंग वर्धन वंशित ध्वनि को सुनकर कृष्णार्चित कृष्ण अर्पित मनवाली ब्रजसुंदरी के एक दूसरे के अलक्षित होकर So they were going side by side, but they didn't see each other. उपस्थित है, वहाँ प्रेम से मोहित होकर खींचती हुई चली गई और शीघ्राति शीघ्र आने के कारण उनके कानों के कुंडल And because they were running very quickly, थे, their हिल रहे थे। their अभी समय हो गया ना। earrings were also swinging back and forth. और उस समय एक Time is समय up. था जब चलो. गोपियां जब एक साथ में So जब when the gopis they were दौड़ रही थी, running ऐसे लगते मानो आकाश Side by में side. विद्युत चमक रही थी, क्योंकि सब गोपियां कैसी थी, like all the gopis, they were golden color, right? स्वर्ण वर्ण। Like the golden molten gold, so beautiful. हमारे रघुनाथ दास गोस्वामी Our Raghunath Das Goswami he described in one verse. रसस्थली में समस्त गोपियां जब उपस्थित हुई, When the gopis came in the Rasa Sthali, कृष्ण in the place of the Rasa, क्या बोले प्रश्न क्या बोले प्रशंसा करने लगे। Krishna was glorifying all the gopis. क्या बोले जी आप लोग सब He said, वर्ण हो, all of you, you are like golden, सुंदरी हो, you are so beautiful. है। आज में कंपटीशन होता है, So when there is a competition, is then कंपटीशन होता है, when there is a competition, if निम्न हो ऊंचा हो, someone में कंपटीशन कैसे हो जाएगा। if someone is higher and another person is inferior, if everyone is same level, then there is no competition. Competition is there when there's someone higher and another one more inferior, है कि नहीं होता। isn't it? किंतु यहाँ पर कृष्ण कह रही है But Krishna said, गोपियों, आप लोग सब देखने सभी सुंदरी है, gopis, you are also beautiful. और उस समय गोपियां सभी जो है क्या बोले सौभाग्य मन से मत हो गए। And also you are रघुनाथ दास गोस्वामी full of the Saubhagya Mad. कर रहे हैं
सब pride of their good मैं fortune. सबसे सुंदर हूँ, मैं सबसे All the gopis were thinking, I am the most beautiful, most beautiful. सभी गोपियां कर रही हैं। All gopis were कोई नहीं thinking. कर रहे जे मैं No gopi was saying, oh, I'm inferior or not so pretty as the other one. No, all they were thinking they're most pretty. मैं सबसे सुंदर I'm the most pretty of all. I'm the prettiest, and more gorgeous, most gorgeous. So the gopis, they were quarreling to each other. How come you think I'm more ugly than you? Then they were quarreling to each other. विद्या किसी के पास आ जाए, Like someone has some knowledge. तुमसे मैं थोड़ी कम हूँ, Oh, do you think I'm more inferior than you? What is it? है? What is this? मैं भी अच्छा बोलता हूँ, तो वो भी मैं कहता मैं अच्छा बोलता I speak well. Me too. I also speak well. हूँ। तो गोपियों के इसी प्रकार जब So- समस्त गोपियाँ जब क्या बोले उसको क्या बोलता है ये जो सौभाग्य मन से मत हो, So the gopis, they are so absorbed, completely intoxicated with intoxicated their own beauty. with their own beauty. And सौभाग्य मत, they completely intoxicated with their own beauty और great fortune, great fortune. अपने सौभाग्य मत होकर के हम सबसे सुंदर हैं, हम सबसे सुंदर Thinking, oh, I'm the most pretty. I'm the most pretty. हैं। अभी निर्णय कौन देगा? So who will judge who is the most pretty? Who is the prettiest or the most beautiful? सभी लड़का यदि So if all the boys in a class say, oh, I'm the best, who will decide who is the best student? Is the teacher. समय रासस्थल में So Krishna, खड़े होकर कहने he was standing in the highest platform in the Ras dance and said, Gopis, take it easy, calm down. I will judge, decide who is the most pretty of all, who is the prettiest of all the gopis, who is the most gorgeous, who is the more beautiful of all. So all of you are golden complexion, सबसे सुंदरी कौन है? but who is the prettiest? वो मैं देता हूँ। I will जैसे हम decide. सोने खरीदने के लिए जाते हैं, Just like, for example, if we buy gold, we have to analyze the carats of the gold. It's 18 carats, 10 carats, 24 carats. What is the best? 24 carats is the best gold. जो होता है ना वो बता देते हैं। A goldsmith can tell you that, for example. ये जो है सब 24 कैरेट, 24 तो श्रेष्ठ माना जाता है ना, है? So the 24 carats is the best gold. 9% हमने सुना It's है, 90%, खाद बिना सोना नहीं बनता है। 99% खाद को निकाल दीजिए, gold and तरल हो जाता है। 1% cad. अलंकार निकाल Sorry, cad, I don't know the translation. बनाया जाता So because without that, you cannot make the ornament with the gold. है। मिलावट नहीं बने तो सोने वो Without having जितने this भी है उसमें mixture with the gold, you cannot make कहीं नहीं कुछ ornament with gold. है, वो जुड़ेगा नहीं। Otherwise, the gold will not make the shape properly. इसलिए जो इसमें कैरेट रखा गया, So कोई 18 कैरेट होता है, कोई So 20 some कैरेट होता है, gold is 24 में होता है। 24 carats. 24 carats is the original gold, but also there is some आभूषण के लिए another substance. उसमें भी मिलावट रहता है। चलो कृष्ण तो कहने लगे मैं ही निर्णय देता So Krishna said, I will decide. हूँ। कृष्ण How? तुम कैसे निर्णय दोगे? How will you कृष्ण decide? अपने लंबी भुजा को दिखाया, Then Krishna showed his long arms and said, मेरे ये मानो लंबी भुजा दी एक कसौटी है। my long arms is a kasoti. कसौटी होता है ना, You know, kasoti is one kind of, सोनार के दुकान में जाओ, if you go to a goldsmith shop, पत्थर रहता है, like jewel shop, they have one kind of a black stone सोनार के चोर कहा जाता है। that they use to measure how much pure is that gold. उसे खींच देंगे ना, उसे सोना कहीं न कहीं उसके थोड़ा बहुत निकाल लेते हैं। But that's why the goldsmiths, they are called also thief, because when they test your gold, they also risk it so deeply that some part of your gold will fall down there, and then you don't see it. Then you leave the shop. Later they'll take this little bit of your gold that you left there, and they will sell it and get money from you. कहाँ से सोना तो ही है, सोने से आता है, लेकिन निकल तो दोबारा थोड़ी उसको साफ किया जाता है, फिर उसको निकाला जाता है। अरे 10 व्यक्ति को निकाल लो, कहीं नहीं तो आ जाएगा, आता है। हम सुना है, बोले अपने बेटी की भी सोना जिद करे उसमें वो चोरी कर ले। I heard that the goldsmiths, even for their own daughter, they will also steal from their own daughters. आज समझ ही नहीं है, The gold, they always steal gold. तो इसका दुख आ जाएगा, इससे ज्यादा If I speak too much, she'll be upset because I think maybe someone in her family. चरितामृत में लिखा है ना, But it's written in Chaitanya Charitamrita. के घर में है ना, महाप्रभु उसके घर में बोले, ककड़े बोले ये सोनारिया है, इसके घर में कैसे रह रहे हैं? Mahaprabhu said, दुकान करते हैं ना, how come you're in that person's house? That person is a goldsmith. चोरी करना पाप है, इसके घर में कैसे भोजन करेंगे? How can you eat in the house of that person? Because that person is a goldsmith, and the goldsmiths always steal. They are thieves. खाने के समय करा लेते हैं, हाँ जो बनाता है,
अरे तुम हम तुम्हारे लिए थोड़ी कर रहे हैं I'm not talking about you. तुम है कि नहीं तुम तो बेचते हो खरीदते हो बेचते हो You just buy and sell. जो बनाते हैं I'm telling those who are making बेचते हैं and selling. है ऐसी तो होता ही बहुत चलो हम ही Anyway, तरफ नहीं जा रहे I'm not going to that direction. हाँ क्या बोल दिया कृष्ण कहने लगे देखो So मेरे Krishna हाथ said, क्या "Look, है, ये कसौटी है My arm is a kasoti, रुपया हाथ के द्वारा this black stone that मैं ये करता tests the pure gold." So he said, I will decide सबसे सुंदरी स्वर्णवर्णी who is the most beautiful golden gopi. Because all of you are like golden, right? सोने की भाने पुतली जैसी है वास्तव You are just like a golden doll. This is true. मानो ऐसे साक्षात रूप में एक एक सोने की The gopis are just like a golden doll, each of them. This is true. इतने सुंदरी है They're so beautiful. छठा जी इसलिए कहते हैं, राधा जी के लिए तो कहा गया तब तक कांचन गौरांगी So Srimati Radha is tapped up Kanchana Gaurangi, like golden molten gold. But all the gopis are also like this. So beautiful. है ना अच्छा तो कहने बोले कैसे करोगे तो कृष्ण बोले हमारे लंबे भुजाओं के द्वारा Krishna मैं said, क्या करूं आप मैं कसौटी से कस करके with my long arms, I'll just like I rub you, just like this black stone, and I'll check who is the best. सैकड़ों गोपियां है ना Then there are billions of gopis. So Krishna was holding and lifting them, like embracing and lifting them. Raghunath Goswami explains, not me. उसमें वर्णन है श्लोक है There's a verse explaining. लाया नहीं मैंने उसमें है I didn't bring it, but yes. सब गोपियों के ऐसे एक करके उठाया जैसे स्वर्ण की So Krishna lifted each gopi, just like you lift like the gold. And in the end, Krishna said, सुंदर के 24 कैरेट कौन आ who is the 24 carats gopi? Shrimati Radhika. उसमें तो दो ये है ही नहीं मेल नहीं 26 कैरेट तो होते नहीं ना 24 कैरेट तो होते No, sorry, not 26 carats, 24 carats. उसमें स्वयं कृष्ण समस्त गोपियों के उठा करके अपने भुजा रूपी कसौटी के द्वारा So Krishna lifted all the gopis, and with his arms that are like this kasoti, like this black stone that checks the gold, he decided that Shrimati Radhika was the best. भागवती इसलिए कह रहे हैं सब गोपियां रासस्थल में सोच रहे हैं ये So all the gopis in the Rasasthali, they were thinking, मैं I am with Krishna. विराजमान हो जाऊं I am with Krishna. That's why they are so proud of their good fortune, because they thought they were with Krishna. कृष्ण के पास चंद्रावली सोचते हैं मैं थोड़ी कम ही हूं Like Chandravali thought, I'm nothing less also, because गोपियां सब हम कृष्ण Krishna is also with me. Why Krishna wouldn't be with me? He's with me here. ने निर्णय दे दिया But Krishna decided in this way. बोलिए इसमें भी कोई कोई वैष्णव कथाकार भी कहते हैं Some Vaishnavas also explain. कृष्ण के पास क्यों है बोले स्वयं कृष्ण ने निर्णय दे दिया ये सर्वश्रेष्ठ है तयोरो उभरे Krishna judged and decided सर्वाधिका Shrimati Radhika is the best of all the gopis. महाभाव स्वरूपिणी गुणई रति बरीयसी है ये तो पढ़ने निर्णय दिया कि नहीं दिया He decided समस्त गोपियों में जो है राधा जी श्रेष्ठ है Shrimati Radhika is the best of all the ये निर्णय gopis. किसने दिया कृष्ण ही निर्णय Krishna himself decided it. है कृष्ण के साथ खड़े होने की कौन नहीं चाहते सब गोपियां चाह रहे हैं किंतु यहाँ पर कृष्ण स्वयं निर्णय So all the gopis, they want to be lifted by Krishna, but Krishna decided who is the best? Shrimati Radhika. की कथा श्रवण करेंगे So later continue. कृपा सिंधु वैवच Vanchakalp. पतितानं पावने भो वैष्णवे भो नमो अच्छा ये दो राष्ट्र चार प्रकार की गोपियां नहीं गोपियां एक प्रकार की है 4 kinds of gopi? No, only one kind of gopi. All the gopis are Padmini. जड़ जगत में सामुद्रिक विज्ञान के अनुसार So in this world, according to the scientists, Samudri, what is Samudri? This kind of scientists लक्षण के द्वारा is some scientists that they analyze the विचार की जाती है man and woman, and they consider about पूछा जाती है ये चार प्रकार के पुरुष होता है like kinds of men and four kinds of men and 4 kinds of women, and this has to do with the astrology shastras, शास्त्र के अनुसार Jyotish Shastra, the astrology shastra. According to the Kundali, मिलाते हैं to the like birth charts, जो है वो ये देखते हैं ये पुरुष कौन सा पुरुष they see which kind of man is this, पुरुष में भी चार प्रकार होते हैं because there are 4 kinds of men भी चार प्रकार होते and 4 kinds of women also. हैं उसमें गौन होता है Also the Gan, someone is from Raksha Gan, sometimes some people Dev Gan, Manushya Gan, like a human being, demon or demigod. तो भूल गया करता नहीं I also learned this, but I little bit forgot because this waste of time. I don't do this more. ये देख लेता हूँ इधर ही तक है ज्यादा तो मेरे वो सब माने But I also see some
Kundali. एक बार सीखा था मैंने, One time I learned all this. इसके बाद मैं देखता नहीं करता, Then समय I नष्ट हो stop it because गया। I. कहते हैं आप हमें देख दो, ये Otherwise, people will be asking me so many things that about I see my birth chart, this and that. So I stopped, but I study this. नॉलेज नहीं है। But actually, I don't have deep knowledge. I just have simple knowledge. I can see your birth charts, your kundali, and I'll say something. जानना है तो ज्योतिष If you want to see, if you want to know more, then you have to go to the astrologer. मैं सीधी बात, मैं झूठ क्यों बोलूं? I'll not lie. फायदा कुछ नहीं है, No benefit in कुछ नहीं है। lying to the people. I cannot get any money or anything. तो उसमें जो है So, वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार समुद्र according to the astrologic shastra, in चार प्रकार के स्त्री होते हैं, Samudra, science is one kind of science. उसमें गौण होता है। So जैसे कोई स्त्री there are 4 kinds of women, 4 kinds of men, and also the guns. राक्षस गण Like for example, Rakshas gun, demon, Manusha gun, सिस्टम माना जाता है। सिस्टम and the human being. देवगण में शादी हो, So Devagan is के साथ मनुष्य गण में शादी, a person. Devagan can marry someone of Devagan. A Rakshas gun can marry a Rakshas gun, में जो क्या वजह and Manusha gun marry Manusha gun. यदि नहीं होता है, हर जगह में नहीं मिलता रहता, But not always you can meet with the same देवगण नहीं मिलता नहीं है। same like man and woman both Devgan, for example. पुरुष So देवगण हो, if the man is Devgan यदि मनुष्य गण and the woman is Manusha gun, then you can marry them. They can be married. देवगण हो जाए और If one of them is Devagan and another one is Rakshas gun, then they cannot mix. विवाह विच्छेद हो जाएगा। They will be separated. में सदा सर्वदा क्या रहेगा? Otherwise, there will be also always problem in their and fights in their house, अवतार राक्षस में जैसे थे ना, उसमें just like the demigods and the demons. आप समझ नहीं पाओगे। There are some things, qualities, but if I tell you, you will not understand. There are many considerations. विवाह के समय ये देखते हैं ना, In the time of the wedding, the astrologer checks before the marriage. He checks all these points आज ये होता है। of the synastry. शादी कर लेते हैं, Otherwise, you just शादी marry. कर लिए तो क्या हो? If you do love marriage, then after some days you'll divorce because you didn't check these things, this synastry of the couple. आई One day I love you, then I leave you, then I kill you. This is true तो पुष्टि वो तो ये मिलन नहीं किया, वो अपने की किया। because they did not meet the synastry properly. देवगण हो रहा है, So if someone is in the Devagan, देवगण हो रहा है, a man is in the Devagan, राक्षस गण हो रहा है, or maybe in the Rakshas Gan, woman is in the Devagan, मिलन नहीं हो सकता है। they cannot meet together or marry. हाँ समझिए, उसमें होगा विवाह विच्छेद जरूर हो जाए। Otherwise, certainly they will divorce, or maybe they will have constant quarrel. उसके लक्षण होता है, ज्यादा लक्षण मतलब अपने सब दिखते रहोगे, हम ये सब दूसरे को देखोगे तुम समझिए क्योंकि वो उसके क्या करो, उसके लक्षण है सब। So there are symptoms of everything. एक हाँ सारी So all the gopis are Padmini, right? अरे ये सब जो बता रहेगा ये गोपियों में कोई हस्तिनी नहीं होते उसमें। So the gopis know any gopi was Hastini. ये तो समुद्रिक विज्ञान से सब दिखा रहे हैं। आप समुद्रिक विज्ञान कहते हैं ज्योतिष शास्त्र के एक ज्योतिष शास्त्र के मूल शास्त्र को समुद्रिक विज्ञान कहा जाता है। So the main shastra लक्षण दे करके of the astrologic shastra is Samudra Vigyan. They see the body and they make many conclusions. तो उसके कहने की तात्पर्य होता है महाप्रभु के अंग So, प्रत्यंग की When they saw इस Mahaprabhu, प्रकार के लक्षण there are के द्वारा 33 symptoms and they decided judge something about Mahaprabhu. 33 टाइप्स ऑफ लक्षण होता है उसमें। अब वो चैतन्य चरितामृत में देखना उसमें So you can see this in the Chaitanya Charitamrita. वर्णन होते जा रहे हैं। This description of Mahaprabhu. बाहु Like Mahaprabhu always, प्रकार के लक्षण 33 so में there are 33 लक्षण महाप्रभु में विराज 33 kinds of symptoms that Mahaprabhu has लक्षण कहीं पर दिखा जाता that the human beings don't have. They have maybe only 1 or 2 symptoms. Like for in the body, for example, Bhaktivedanta Prabhupada has broad nose, चैतन्य महाप्रभु में 33 से 33 जो लक्षण होता है but Mahaprabhu had the 33 symptoms in the body वो तो रूप में of a Mahapurush, all the 33 symptoms. हाँ सुनाइए। उसमें विचार है, उसमें देखना चैतन्य चरितामृत में You can see in the Chaitanya Charitamrita in the Anubhasha. अधिक You can read and see. है। हाँ समझिए। और प्राकृतिक जगत में जो कहा जाता है और एक ग्रंथ है उस So ग्रंथ में there's मंजरी एक ग्रंथ है। Another book called Rati Manjari. मंजरी एक ग्रंथ है। उस The book ग्रंथ में Rati Manjari सब वर्णन है। also describes all this. वो गोपियों के लिए कहते जा रहे हैं, सब गोपियां उसमें कोई हस्तिनी नहीं होते। So the gopis are not ये क्या बोले? Hastini. No any gopis Hastini. संखनी नहीं होते। Also Sankhini, also not. चित्राणी नहीं होते। Not also Chitrani. वो सब उसमें लक्षण जो है
कौन लक्षण के द्वारा कौन स्त्री को किसी प्रकार का So how to identify which kind of woman according to their symptoms and character features? Men ये सब also, विचार जड़ जगत की है। but it's all from material world. But you can also infer same from the spiritual world. We're not seeing the spiritual world. जहाँ पर भी शब्द कहा गया सब पद्मिनी शब्द की So for the gopis, all them are Padmini and they are referred as Padmini woman. यहाँ पर लक्षण दिखाते जा रहे हैं सब गोपियों के लिए शब्द पद्मिनी शब्द ही So प्रकट किया गया। all the gopis they are referred to as Padmini women. गोपियों के साथ उपहास करते हैं। So that's why Krishna is he was laughing and joking with the gopis, saying, "Hey gopis, all of you are Padmini." पद्मिनी किसको कहा जाता है? कमल Who is a Padmini? कमल के पद्मिनी। Padmini is also like referring to the lotus. जी कमल के पति कौन है? Who is the lord of the lotus? है? सूर्य है। The sun is like the master or the husband of the lotus. Do you understand? कमल अपने मकरंद के किसको पान कराते हैं? But the lotus is giving its own nectar to the bumblebee. So उपहास है उसमें। so this is a joke. So actually like the lotus is like doing the paramour moods with the bumblebee. मैंने वो कौन सा ग्रंथ लिखा? गोपी गीत में जो है In the Gopi Gita, सब वही लिखा गया सब। I also wrote this. I indicated this also. गोपी गीत में पढ़ना। मेरा जो गोपी गीत इंग्लिश में जो My Gopi Gita in English. है उसमें सब वर्णन है। All this is described. कृष्ण गोपी के साथ उपहास करते जा रहे So Krishna is like joking with the gopis saying these things. हैं। और ये सब विश्वनाथ चक्रवर्ती टीका में है ये। And Vishwanath Chakravarti also explains the commentaries, not me. मैं पढ़ा नहीं है इसमें पढ़ूंगा तो देखा गया इसमें है कि नहीं है। I'll read more to see if it's there or not. But Vishwanath Chakravarti also mentions. Krishna said, "Oh gopis, you are Padmini." पद्म जैसे पद्म के पति को So just like the lotus, their husband of lotus is the sun. पान नहीं करा कर But the lotus is not giving its pollen and nectar to the sun, but instead to the bumblebee. कृष्ण ये कहना चाहते हैं So Krishna wants to say, बात हुए पर भी gopis, even though you are married, आपके प्रेम I'm like the bumblebee. I want to relish your ये सब love. अनेक है। ये सब आप लोग क्या समझ पाओगे? What can you understand about this? हैं, अभी तो जो बोलते हैं वो तो भूल जाते हो। Even what I say, you forget after. इधर से बोलो उधर से उसमें बहुत कुछ है। आज ये सब There are many considerations. उस ग्रंथ में मैंने तो लिखा शायद ना गोपी गीत है आपके पास? Do you have Gopi Gita? देखना You can see in the Gopi Gita. जब लिखने के समय When I wrote Gopi Gita, I दिया था बहुत also gave this. हैं? क्या कहते हैं? अभी तो वही नहीं है भ्रमर गीत एक ही हिंदी गीत नहीं है भ्रमर गीता भी So they're saying about the Gopi Gita, it's not translated in Hindi. भगवान Not even the Brahmana Gita is in Hindi. Bhakta Bhakti Bhagavan also not. हिंदी वाले कोई है नहीं तुम लिख ट्रांसलेट करने वाले कोई है? Is there anyone to translate my books in Hindi? हिंदी वाले कोई है नहीं तुम लिख ट्रांसलेट करने वाले कोई है? इंग्लिश They finished.
Okay, Katha is finished. Jai Shri Gurudev ki jai.